नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजियन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, केटसी, सिल्वर टू द मस्कियम नेशंस। ये बहुत दुख की बात है कि ब्रिटिश कोलंबिया में 4 बच्चों का मौत हो गया ड्यू टू स्ट्रिप थ्रोट। These children were under the age of 10 years old. अगर आपके बच्चे को फीवर 3 to 4 days से ज़्यादा रहता है तो आप भी अपने बच्चे को इमरजेंसी में लेकर जाइए. Get the treatment sooner than later. 5 homeless people died on January 13 due to deep freeze in Vancouver. When their dead bodies were recovered, they died with cold temperature. Over 10,000 people are admitted in the hospitals due to influenza. All the hospitals are overflowing with patients due to flu, so get your flu shots now. Only 13% of the people in BC got influenza shots, and only 18% of the people got COVID booster. We think that COVID and influenza are gone, but that's not true. We all need to protect ourselves and from our deadly virus that are going around. आप सभी के फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास पूरे हफ्ते भर के न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। लेटेस्ट न्यूज़ और लोकल न्यूज़ स्पोर्ट्स लीजिए, सुनिए। नमस्कार, फिजियन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की वर्किंग कमेटी अगले शुक्रवार को मैनेजमेंट बोर्ड को एक प्रस्ताव देगी कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को बदल दिया जाए। सोडेल्पा मैनेजमेंट बोर्ड कोalition सरकार से प्रधानमंत्री बनने के लिए उप प्रधानमंत्री मानोआ कमकमीदा के ऑप्शंस पर चर्चा करेगी या सोडेल्पा फिजी फर्स्ट पार्टी के साथ बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलेगी। वे प्रस्ताव रखेंगे कि सितिवेनी रंबुका को प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी मौजूदा उप प्रधानमंत्री मानोआ कमकमीदा को दिया जाए। वर्किंग कमेटी को इस प्रस्ताव रखेगी कि बर्खास्त शिक्षा मंत्री असेरी रंड्रोंड्रो अपने मंत्री पद को बरकरार रखे। रंड्रोंड्रो को कैबिनेट में बर्खास्त करने का रंबुका के फैसले पर विचार विमर्श करने के लिए सोडेल्पा की वर्किंग कमेटी शुक्रवार पूरे दिन बैठक में थी। जनरल सेक्रेटरी विलियम तकायावा का कहना है कि ये वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को जो अब बोर्ड अगले शुक्रवार को बैठक बुलाएगा तो मैनेजमेंट बोर्ड को एक प्रस्ताव देगा। तकियावा का कहना है कि उनके बीच एक कोalition एग्रीमेंट है और कैबिनेट में उनके सदस्यों के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि कोalition एग्रीमेंट का हिस्सा था कि वो मंथली मीटिंग करे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल उनकी केवल एक ही मीटिंग हुई है, जो काफ़ी चिंताजनक है। तकायावा कहते हैं कि पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री को भेजे गए सभी लेटर्स के कंसर्न को अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, जो कोalition एग्रीमेंट पर फिर से सवाल उठाता है। इस बीच वर्किंग कमेटी ने रंड्रोंड्रो को मैनेजमेंट बोर्ड के बैठक की प्रतीक्षा करते हुए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने रहने की सलाह दी है। यह इसलिए हुआ है कि जब शुक्रवार रात प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने असेरी रंड्रोंड्रो को कैबिनेट से बर्खास्त करने की घोषणा की थी। रंबुका ने अपने निर्देशों के प्रति इनसबऑर्डिनेशन और डिसओबीडियंस का हवाला देते हुए सोमवार से रंड्रोंड्रो को कैबिनेट से बर्खास्त करने का फैसला किया है। वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी प्रेसिडेंट रातू मानोआ रोरांगादा, वाइस प्रेसिडेंट फिलिमेने सोंगेता और रोको अवेनितो कोलिकाता, मिनिस्टर फॉर आइतोकी अफेयर्स इफिरेमी वासु और जनरल सेक्रेटरी विलियम तकायावा भाग ले रहे हैं। बैठक में असेरी रोंड्रो भी हिस्सा ले रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने जनता पर जोर दिया है कि वो शिक्षा मंत्री असेरी रंड्रोंड्रो को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के अपने फैसले पर कायम है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मानोआ कमकमीदा ने कहा है कि उनकी लॉयल्टी प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फिजी के रिबिल्ड करने के सपने को सक्रिय करने के लिए उनके साथ में है। उप प्रधानमंत्री मानोआ कमकमीदा की यह टिप्पणी इस खुलासे के बाद है कि सोडेल्पा वर्किंग ग्रुप चाहता है कि कमकमीदा प्रधानमंत्री के रूप में सितिवेनी रंबुका की जगह ले। कमकमीदा ने बताया है कि किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है और उनका जवाब है कि उनके पास एक प्रधानमंत्री या पीपल्स कोalition और पीपल्स अलायंस के नेता सितिवेनी रंबुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के प्रति वफादार है।
सवेनी लोटोका में एक 35 वर्षीय कारपेंटर जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में कथित तौर पर चाकू मार दिया गया था की मृत्यु हो गई है। घटना गुरुवार रात को हुई थी। पुलिस ने पुष्टि की है कि पीड़ित को एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मारा था जो एक कार में बैठकर भाग गया। पीड़ित के गंभीर हालत में लोटोका अस्पताल के आईसीयू यूनिट में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार सुबह उनका निधन हो गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक संदिग्ध की पहचान करने और उसे पकड़ना बाकी है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस जनता से उन 2 टीन एज लड़कियों के ढूंढने में मदद करने की आग्रह कर रही है जिनके बारे में मंगलवार को नकासी से लापता होने की सूचना मिली थी। 18 वर्षीय जेसिका रॉबर्ट्स डिलो स्ट्रीट नकासी में रहती है और 17 वर्षीय मोराशा पिल्ले नसेले क्रिसन नकासी में रहने वाली है। पिछले मंगलवार को दोपहर के आसपास घर से निकली और फिर कभी नहीं लौटी। पुलिस का कहना है कि लापता दोनों दोस्त है और वे रॉबर्ट का बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए गए हुए थे। जनता से मांग किया जा रहा है कि अगर किसी को इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी है तो वो पुलिस से संपर्क करे। एक 35 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है क्योंकि उसने कथित तौर पर लोटोका पुलिस स्टेशन के सामने के शीशे पर पथराव किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि घटना गुरुवार रात करीब 8:40 PM हुई थी। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। इमिग्रेशन ऑफिस के रिलोकेशन के कारण पासपोर्ट सेवाएं 4 मार्च से 22 मार्च तक अस्थायी रूप से सस्पेंडेड रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन और होम अफेयर्स का कहना है कि फिजी इमिग्रेशन शुक्रवार 2 फरवरी से रामलला रामदिन बिल्डिंग 40 रॉबर्टसन रोड सुवा में मूव हो जाएगा। मंत्रालय में भी यह सलाह दी गई है कि 29 जनवरी से डिपार्टमेंट अब कैश और चेक से किए गए पेमेंट्स स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एफटोस या एम पैसा मेथड का ही पेमेंट एकमात्र ही तरीका रहेगा। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। पुलिस का कहना है कि सरी ग्रीन टिम्बर्स एरिया में शनिवार सुबह हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। सरी आरसीएमपी का कहना है कि उन्हें शनिवार देर रात 1 बजे के बाद 91 एवेन्यू और 147 स्ट्रीट पर बुलाया गया था। पहुंचने पर पुलिस का कहना है कि उन्हें एक व्यक्ति बंदूक की गोली से घायल अवस्था में मिला, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल जांच जारी है और आरसीएमपी का कहना है कि मकसद का पता नहीं लगा चला है। जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 604-599-0502 पर संपर्क करने या आरसीएमपी को संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कोकिटलम आरसीएमपी ड्राइवरों को इस बात से सुरक्षित करते हैं कि गाड़ी चलाने से पहले आपकी कार का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जनवरी की शुरुआत में पुलिस ने 24 वायलेशन टिकट्स जारी किए थे। पुलिस का कहना है कि पिछले वर्ष में बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने वाले की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि मई 2022 से लाइसेंस प्लेट डेकल्स की आवश्यकता नहीं रह गई थी। पुलिस ड्राइवरों को यह सुनिश्चित करते हैं कि और प्रोत्साहित करते हैं कि यात्रा से पहले उनके वाहनों की उचित बीमा करा लेना चाहिए। बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर ड्राइवरों को $598 का टिकट मिल सकता है या उनके व्हीकल भी टो हो सकते हैं। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। फिजी बार्बेरियंस की जीत कोरल कोस्ट सेवंस में हुआ जब उन्होंने सोनाका को 22-5 से पराजित करते हुए कप फाइनल जीत लिया है। हाफ टाइम में बार्बेरियंस की जीत 17-0 से हो रहा था। अंतिम परिणाम फिजी बार्बेरियंस 22, सोनाका 5। HSB सेवंस के अंतर्गत पर्थ सेवंस 26 जनवरी से 28 जनवरी तक खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे गेम में पूल्स कुछ इस प्रकार है। पूल ए में सीरीज लीडर्स अर्जेंटीना को रखा गया है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और स्पेन को रखा गया है। पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए को रखा गया है। पूल सी में फिजी, न्यूजीलैंड, फ्रांस और सामोआ को रखा गया है। फिजी सोका के अंतर्गत चैंपियन वर्सेस चैंपियन सीरीज चेचिल पार्क लोटोका में 28 जनवरी और 4 फरवरी को खेला जाएगा। ये बा और लोटोका के बीच में होगा और इन दोनों टीम अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं इसको जीतने के लिए। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है। प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी टू मेक सम नोट्स। फरवरी 22 पिक सोसाइटी एक मेगा जॉब फेयर करने जा रही है स्टार्टिंग एट 10 AM at Italian Cultural Center in Vancouver at 3075 Slocan Street in Vancouver.
There will be over 100 exhibitions and thousands of people will attend this job fair. Please call for more information Lily Dhadral at 604-596-7722 extension 331. जनवरी का महीना अल्जाइमर्स मंथ का नाम से जाना जाता है। अल्जाइमर्स आपको पता है कि पीपल के मेमोरीज फेड होने लगते हैं। ये ज़्यादातर सीनियर्स मैन एंड वुमेन में होते हैं। Bell's Let's Talk Day is on January 24th. It's an annual mental health initiative that's focused on how we can support ourselves and those in our community by listening, talking, and being there for one another. Let's all donate for this great cause. Rugby Sevens return to Vancouver 2022-4. Its HSBC Sevens World Rugby will be rocking Vancouver, BC Place on February 23rd, 24th, 25th. Please get your tickets now. This is the second year that we will host men and women Rugby Sevens. You don't want to miss this. Please go to info@bcrugby.com. Pink Shirt Day is on February 28th. Get your pink shirt from London Drugs and wear it on the day and say no to bullying. Isra wa al-Miraj commemorating Prophet Muhammad's miraculous journey in one night. This is taking place on January 27, 2024. Time is 5:30 p.m. at 102-8268 120 Street in Surrey. Light refreshments and dinner will be served. For more information, please call at 604-760-0096, 604-716-5697, or you can call 604-600-5182. ICON will be hosting a free health forum targeted for seniors and their families in South Asian communities in BC and beyond. It's called Healthy Living, Healthy Heart on March 9th at Surrey City Hall. This is from 10 a.m. until 4 p.m. Admission is free. Language, Punjabi, Hindi, English. You'll be served boxed lunch. Address is 13450-104 Surrey, BC. For more information, please call Minka Chu at 604-617-3102. Happy birthday to Kushwa Singh of Surrey, BC. Best wishes are from his loving and beautiful wives Savitri Singh, daughter Shivani, grandkids Aryan, Anaya, and Ayan Singh. On behalf of Fijian Focus team, wishing him a long, healthy, and joyful life. Tu jiyo hazaron saal, ye hai meri dua. Happy birthday, Kush. हमारे स्टूडियो में आए हैं एशनी राम जी. Her daughter was killed a year ago. Please have a look. हेलो एंड वेलकम टू फिजियन फोकस। जी हाँ दोस्तों, फिजियन फोकस को देख रहे हैं। हमारे गेस्ट है आशनी राम। आशनी राम इज़ द मदर ऑफ आयशा, जिसको शायद आपने टीवी में, मैंने तो टीवी में से ही देखा, यू माइट हैव सीन हर रिसेंटली, that she was a victim of homicide, and that took place about a year and a half ago. And she is anxiously looking for the person or the persons who are responsible for this kind of crime. So आज हमारी बातचीत उनके साथ में होएगी और आप देखेंगे, and let's see, she needs help and we are here to help her. So welcome to our studio. Thank you so much. So today we're going to talk about your daughter, Aisha. Yes. I want you to go back in the memory lane and think about your relationship with your daughter when she was growing up. What was she like? And all the memories that you have of your daughter. Growing up, Aisha was a very fun-loving girl. She got herself into a little bit of mischief, girls, Do, yes. Yeah, they do. When she was young, she was very active. She loved drawing. She loved animals. She always had a passion for fashion. She loved makeup. Just a normal young teenager. Yeah. Normal teenager, yeah. Mm-hmm. When she was young, she wanted to become a veterinarian. And as she got older, then she changed her mind. She went from becoming a veterinarian, then she wanted to be a dentist, and then from there, then she had the passion for makeup. So then she wanted to become a makeup artist
She loved doing makeup and hair. So that's what she was getting into. She was actually on a wait list at Blanche McDonald Okay. to become a makeup artist, You had to take her training. to take her training. And sadly, that was cut short. Do you have other siblings? Did she have other? She has an older brother. Okay. He's 26. And how old was she when She passed away? Yeah. She was only 21 when she was passed away. 21 when she became the victim? Victim of homicide. So I know and I understand you are talking about your daughter here as a Very mother. It's very hard. It is very hard. But I'm so grateful, and I think you gave a few interviews on mainstream TV, and that's how I found out Right. that. So far, what has happened to your daughter a year and a half ago? They have not come to any conclusion. Who did it? Why did they do it? Nothing. We know nothing. There is absolutely no answers. That's why IHIT is wanting me to do a media release to ask the public for help if they have any information on Aisha's whereabouts. July 23rd and mainly the 24th, July 24th, the day of, because her phone was off that day or not in service, so we don't know her whereabouts on July the 24th. So IHIT is asking the public to come forward with any information on July 24th if they've seen Aisha maybe at a coffee shop, at a bar, at a mall, SkyTrain station, getting into a car, if she was with anybody. If anybody knows something, to please come forward. Somebody out there knows something, you know. Somebody knows something, and we're just pleading with the public to come forward. We need the public's help. We need to bring a closure. Exactly. Our family needs some closure. We need some peace. Yeah. I mean, this is like not a typical thing for me to do. It's hard for me to ask for help from other people, but this is for my daughter. I'm just wanting to get justice for Aisha. You know, our family needs some peace. We need some closure. I need answers. I need to know what happened to my daughter. Who did this? Why would somebody take an innocent life like that? She was 21 years old. Yeah. She had a whole life to live. And somebody just took that away from her. And what could have she done that bad that somebody just thought she doesn't deserve to live? Exactly. There's a monster out there that's, I don't know, maybe murdering young women. I mean, this is not also for my daughter, it's for other women as well. as well, yeah. Yeah. People, women, you know, that are innocent victims of some monster out there that's going around killing young girls. Yeah. You know, I personally don't know what happened. And that's the thing that keeps me up at night, is not knowing what happened to my daughter. I buried my daughter, and there's a murderer out there. What kind of relationship did you have with your daughter? Me and my daughter were very close. Very close. She was my best friend. Even if she wasn't doing something not you being approval of, she would come and talk to you? Always. Or you guys would She was very open with me about everything. Sometimes a little too open, but she was very open. Okay. We had a very strong relationship. Every weekend we would have a mother and daughter day out. Like the last time I saw Aisha, actually, it was on a Saturday. We went out for lunch at Red Robin's, and then she wanted to meet her friends and asked me to drop her to the mall. Because that was a normal weekend thing. She was always with her friends, with her boyfriend. And she wanted me to drop her to the mall. So I took her to the mall and I dropped her off, not knowing that would be the last time I would see my daughter. You know, that was normal for us to like go to the mall together, go shopping together, road trips. You know, just even staying at home watching movies together. Because she was your baby anyway. She was my baby. She was my only daughter. Yeah. You know. Because your son was a little bit older and he was doing his own stuff. Yes. And how you connect mother and daughter. So you had a Exactly. very good communication. We had a very good And if she relationship. was into anything, she would have come and told you about it? Yes, she would. Mm. She would. But there was no such thing like that. There No. wasn't. Not that I'm aware of. I mean, what kids do behind Of their course, parents' yeah, back, we yeah, don't know. yeah, But yeah. as far as I know, Aisha wasn't doing anything like that. You know, that time, a year and a half ago, you found out your daughter was killed,
and then you had to do funeral and whatever rituals we have to do, we do that. But it never happens that the grief goes away. It never goes away. Like even now, there are some days I wake up and I think she's gonna walk through the door. I'm gonna hear, "Mommy, I'm home. Mommy, I love you." I sometimes I still think it's a nightmare. I'm gonna wake up and she's gonna be there. Part of my heart doesn't believe she's gone. Yes. It's so because hard. you are holding so close to her in your heart. I know. Yeah. Like, I try to show people that I'm okay, but inside I'm not okay. Yeah. Like, until I know what happened to my daughter, until justice is served, until we find who did this to her, I don't think I'll ever have peace. I'll never have closure. Did you receive any support? Did you I go grief for counseling or anything like that? I go for weekly grief counseling every week. I have been for the last year. I have the support of my family, my friends. So, How is your husband taking? Because sometimes girls are very close to their dads too. Well, her dad and we had broken up 12 years Okay. ago, so I remarried. Okay. So her dad was having a hard time with it as well. You know, he lives in Edmonton, so he's struggling too. He wasn't doing very well as well. My son, you know, he was struggling as well, and he's working full time and he's busy with his life. But you know, you can just tell the I sadness know. in their eyes when you talk about it. And when he saw the media release, I could see the tears in his eyes. You know, you try to hide it, but you Well, can't men hide. are a little bit, but because they are not like 10 kids in the family, and if one is missing whatever, you still miss that child, but it's just two of them. Exactly. So And she it was must my- be very painful. They fight, they eat together, they laugh together, they do all those fun things Exactly. together. Yeah. He's like, if he ever has kids, like, you know, his kids are never gonna see their aunt. You know, it's very sad. And if he gets married, the sister is Sister. gone, missing, right? There's Yeah. emptiness in all of our hearts. Yeah. We're all struggling. So today you are here to talk to the public. What do you want to ask the public? How could they be able to help you? I'm just asking the public to please come forward if you have any information about my daughter Aisha, to contact IHIT, Surrey RCMP with any information. If you've seen her maybe at a coffee shop or at the mall, SkyTrain station, if you've seen her with anybody, getting into a car, maybe even maybe getting into a bus. I don't know if she would get into a bus, but maybe, I don't know. Her whereabouts on July the 25th, we don't know. That's the main thing. That's where we're asking the public's help to see if they remember seeing her anywhere. And it would be somewhere in Surrey, most likely. And her body was discovered in Surrey. It was discovered in Surrey, it was in a field behind a parking lot on 124th and 111th in the Bridgeview area. Okay. Yeah, Okay. it was close to Scarborough SkyTrain station. Because when you talk to the RCMP or IHIT, no information is too small to give it to them. Exactly. You know, even one thing you remember, okay, I remembered her around 2 o'clock. She was talking to somebody. Exactly. It will trigger something else. And So- somebody out there knows something. So I know somebody knows something, but even if it's the younger generation, they might be too scared to come forward or to rat out a friend or something. But please, just for our family's sake, you know, this was a human life that was taken. Please come forward with any information you have. I'm just asking the public's help. So there is IHIT number that you're going to give, but also is Crime Stoppers. You know, Crime Stoppers is another big organization in British Columbia and other provinces that you don't have to identify. You don't have to tell them who you are. Just call them, give the information, let them deal with it. Exactly. And they work very closely with the RCMP and the law enforcement. So if you don't want to be identified, just call. Anonymous, yes. yeah. Just, you don't have to give your name. Just, if you have a tip, just call IHIT, Surrey RCMP, Crime Stoppers. And the number I have for IHIT is 1-877-551-4448. Or you can even email them at ihitinfo@rcmp-grc.ca.
fiji.gc.ca. So Okay. if anybody knows anything, please come forward for my family's sake. Give my family some peace and closure. Thank you so much. Thank you. And I Ashni, thank you. you are very brave. Thank you for having me. No, no. It's pleasure is mine for you to be coming and speaking to the audience. And we are from the same community, so Yes. please help us out. A mother is pleading for help for her daughter. Thank you And so I much. think if you are one of them, you would be doing the same thing. If I lost my child, I'll be doing the same thing. Maybe somebody remembers something. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Most welcome. Thank you. Thank you, Ashni Ram, for sharing your story. We pray and hope you find closure of your daughter's death. हमारे पास इतना ही समय था. अब हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए. हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप फिजी इन फोकस से जुड़े रहे. इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. at our Vancouver time on Channel 4 and in Calgary 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी Fiji in Focus को देख सकते हैं. Please press like button and don't forget to share and subscribe to our channels. इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल कमीला सिंह at 604-537-5123 or you can call me Sarah Sharma at 604-992-7253. Happy Republic Day to India, which is on January 26th, from our team at Fiji in Focus. अपने और अपनी फैमिली को ख्याल रखें. Stay safe, stay healthy. मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा. Thank you for spending time with Fiji in Focus. Namaste, Vinaka. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey.